Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर 1 एलिफेंट। और इसका हम लोगों ने शुरू किया हुआ था, यहाँ तक हम लोगों ने रीडिंग फॉर डिटेल तक कर लिया था। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रीडिंग फॉर इन्फेरेंस। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाई डू यू थिंक द एलिफेंट हैंडलर फेल्ड द कैंप with the elephant as soon as the young man had been buried? तो इसका आंसर है the elephant handlers fell the camp with the elephant as soon as the young man had been buried because it was their custom. उसके बाद फिर सेकंड पे आ जाइए, why was Shudo carving the air with the tip of her trunk? Shudo climbed the air with the tip of her trunk because she was restless and nervous due to the death of her long familiar handler. It was neither uncommon nor unexpected, as elephant is a creature of habit and routine. उसके बाद फिर थर्ड पे आ जाइए, when the hesian oak answered just a precaution in paragraph 3, what do you think he was thinking might happen if he did not tie the elephant up so securely? तो इसका आंसर ये है, Hesian Oak was afraid of the restless and nervous behavior of the sheepdog. He was aware of the fact that the absence of a long familiar handler can put sheepdog out of the temper, and she can prove to the danger for the resident of the camp. जिसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 8। और पेज नंबर 8 पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, when the storyteller heard the tiny fragile sound in paragraph number 5, what was the sound and what was its significance? तो ये है, the tiny fragile sound heard by the storyteller was the shoe dog approaching towards the camp. Initially, storyteller thought that shoe dog was sprinkled by the storm and managed to break loose of her feathers, but soon he realized that she was freed by some humans, as sound of dragging chains was not accompanied by the tinkling sound of elephant bell. उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इन पैराग्राफ नंबर 7, व्हाई डू यू थिंक द एलिफेंट स्टॉप एंड लोअर हर हेड? तो इसका आंसर ये है, शी डॉग स्टॉप एंड लोअर हर हेड बिकॉज शी वॉज एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइके थाई एंड figure out how to demolish it with a single bow. उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, और ये है, when the hesian oak saw the footprint he cried out in the horse he carried out in a horse streaming shout. What does this phrase tell you about how he was feeling? तो इसका ये है, when hesian oak saw the footprint he carried out in a horse streaming shout because he was astonished and surprised to see human footprints beside the scalped mark of shoe dog feet. उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं स्पीकिंग एंड लिसनिंग के ऊपर। उसके अंदर क्वेश्चन हमारे पास, इन द स्टोरी यू हैव been working on, there is a mystery. Discuss the following points and come to conclusion as a group. Number 1, how did the elephant shoe dog escape from her heavy chain? तो इसका आंसर है, shoe dog was able to escape from her heavy chain because she was most probably freed by hesian oak. उसके बाद फिर आ जाते हैं, why did she attack Maike Thackenthai? She attacked Maike Thackenthai because her handler was died because of the falling log while carrying out the Maike's order, and she wanted to take the revenge of her handler's death. उसके बाद फिर आ जाते हैं, who had made the human footprints? Supposedly, hesian oak freed the shoe dog from her heavy feathers, and most probably he was the one who made human footprint besides scrubbed mark of shoe dog feet. उसके बाद फिर आ जाते हैं, why is the story called revenge?
storyteller decided to give the title "Revenge" to this story because it was about the revenge of an elephant from a person who was responsible for the death of her long familiar handler. ठीक है, तो ये इसके आंसर्स थे. आई होप सो ये वाला आप लोगों को पूरा के पूरा जो यूनिट का जो मैंने आपके साथ ये लेसन नंबर 1 का मैंने आपके साथ जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन पहले भी शेयर किया था पार्ट नंबर 1 के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर जो मैंने आपके साथ शेयर किया, वो दोनों के दोनों आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे. तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वीडियोज़ इसी तरह से वॉच करते रहिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.